this is the question of curvature. Here the given curve is y is equal to ax upon a plus x, and rho is the radius of curvature at any point xy. We have to show that 2 rho upon a whole power 2 by 3 is equal to y upon x whole square plus x upon y whole square. आप देख सकते हैं यहाँ गिवन कर्व है y इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, और रो जो है इस कर्व के किसी पॉइंट x कामा y पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और शो करना है कि 2 रो अपॉन ए की होल पावर 2 by 3 इज इक्वल टू y अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस x अपॉन y का होल स्क्वायर. So we write here y is equal to ax upon a plus x. This is the equation of given curve. Now first we find here radius of curvature. So differentiate this with respect to x. So differentiate with respect to x here, and we get d by dx of y is equal to d by dx of ax divided by a plus x here. Now we know that this a is constant, so it will be outside the differential operator. So this is d by dx of x upon a plus x. Now here we using quotient formula for the derivative. So we use here first write denominator, then d by dx of numerator, that is x, minus numerator, and d by dx of denominator, that is a plus x, upon denominator square, that is a plus x whole square. We know that differentiation of x with respect to x, this is 1, so this is a plus x here, and minus x, and differentiation of a with respect to x, this is 0, and differentiation of x, this is 1, so this is 0 plus 1, that is 1, so write here x only, so this is a plus x whole square. Now in the numerator we can see here this x is cancelled by this x, so this is a multiplied by a, this is a square divided by a plus x whole square, so this is dy by dx. आप देख सकते हैं यहाँ गिवन कर रहे हैं y इक्वल टू ax अपॉन a प्लस x, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, इसके लिए ऑपरेटर d by dx का यूज कर रहे हैं. सो d by dx ऑफ y इक्वल टू d by dx ऑफ ax अपॉन a प्लस x. अब यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर रहेगा, d by dx ऑफ x अपॉन a प्लस x होगा. इसमें हम क्वोशिएंट फार्मूला यूज करेंगे फॉर डेरिवेटिव. So first we write here denominator d by dx of numerator minus numerator and d by dx of denominator upon denominator का square. तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर की प्लेस पे a plus x है, into d by dx of numerator that is x हो गया, minus numerator that is x, and d by dx of denominator that is a plus x upon denominator का square, a plus x का whole square. Now differentiation of x with respect to x, this is 1, so d by dx of x is 1, so this is a plus x. And here we can see differentiation of a with respect to x is 0, and differentiation of x with respect to x, this is 1, so here is x. So this plus x and minus x is cancelled, so a multiplied by a, this is a square divided by a plus x whole square. आप देख सकते हैं dy by dx फाइंड किया है आपने. Now we find out d2y by dx2. So we differentiate again with respect to x. So we find d2y by dx2 is equal to a square is constant here, and d by dx, and this a plus x whole power 2 goes to the numerator, we write x plus a whole power minus 2. Now we differentiate this, we write this minus 2a square and x plus a whole power minus 3. And differentiation of x with respect to x is 1, and differentiation of a with respect to x is 0. So this is minus 2a square upon x plus a whole power minus 3. So this can be written as 2a square upon x plus a whole cube. So this is d2y by dx2. आप देख सकते हैं जो dy by dx की वैल्यू है इसको अगेन डिफरेंशिएट किया गया इसके रिस्पेक्ट में. a स्क्वायर यहाँ इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर लिखेंगे. a x प्लस a की होल पावर 2 को इसको न्यूमरेटर में आएंगे तो पावर माइनस 2 हो जाएगी. अब x की पावर n का d by dx का फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, उसका यूज करेंगे. n के प्लेस पे यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x प्लस a की पावर माइनस 2 माइनस 1 होगा, उसको माइनस 3 लिखेंगे. फिर x प्लस a की पावर माइनस 3 को जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो पावर इसका प्लस में हो जाएगा. Now we find out here radius of curvature rho, and we know that the formula for the Cartesian curve is 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 divided by d2y by dx2. So rho is equal to 1 plus, here dy by dx is a square upon a plus x whole square, so squaring this we get here
a to the power 4 divided by x plus a whole power 4 whole power 3 by 2 upon put here d2y by ds2 that is 2a square upon x plus a whole cube. Here we neglect this negative sign because radius of curvature cannot be negative. So solving this, here we take LCM. In this bracket we get x plus a whole power 4 plus a to the power 4 whole power 3 by 2 divided by here x plus a whole power 4 whole power 3 by 2. So this power 4 cancelled by 2, 2 to the 4 and 2 multiplied by 3. So this is x plus a whole power 6. And this 2a square and this x plus a whole cube goes to the numerator. So we write here x plus a whole cube. Now this x plus a whole cube cancelled by this 6 power, we get here 3 power. So we write this rho is equal to x plus a whole power 4 plus a to the power 4 whole power 3 by 2 divided by here this is 2a square and x plus a whole cube. So this is the radius of curvature here. Now we can see here we have to prove that 2 rho upon a whole power 2 by 3. So we can write this. Now we find here 2 rho. So this 2 multiplied in this side. So 2 rho is equal to x plus a whole power 4 plus a power 4 whole power 3 by 2 upon a square and x plus a whole cube. Here we can see in this proving here 2 rho upon a. So this equation divided by a in both the sides. So we get here 2 rho divided by a and here x plus a whole power 4 plus whole a power 4 whole power 3 by 2 and here a cube x plus a whole cube. आप देख सकते हैं जो आपको प्रूफ करना है उसमें 2 रो अपॉन a लिखा हुआ है. तो इस इक्वेशन में हम बोथ साइड में a से डिवाइड कर देंगे तो इधर a स्क्वायर टू a क्यूब हो जाएगा तो इधर 2 रो अपॉन a होगा. नाउ वी टेकिंग हियर पावर raised power 2 by 3 on both sides. So this is 2 rho upon a whole power 2 by 3 and in the right hand side here we use x plus a whole power 4 plus a power 4 whole power 3 by 2 and whole power 2 by 3. And in the denominator this is a x plus a whole cube whole power this is 2 by 3. आप देख सकते हैं बोथ साइड में जो पावर है 2 by 3 रेस की गई है बिकॉज यहाँ पर हमको जो प्रूफ करना है उसमें 2 रो अपॉन a की होल पावर 2 by 3 है. नाउ वी कैन सी हियर दिस 2 cancelled by this 2 and this 3 cancelled by this 3 and this 3 is cancelled by this 3. So we write here x plus a whole power 4 plus a to the power 4 divided by a. Here a multiplied by x plus a whole square. So this is a square and x plus a whole square. Now we bifurcate this term. So this upon this plus this upon this. So we write here x plus a whole power 4 divided by a square and x plus a whole square plus a to the power 4 divided by a square and x plus a whole square. Now we can see here this x plus a whole square cancelled by this power 4. So here power will be 2. So this is equal to x plus a whole square upon a square. And this here a square cancelled by this power. So a square upon x plus a whole square. So this is 2 rho upon a whole power 2 by 3. So from the given curve we can see here this x goes to the denominator in the left hand side. So y upon x is equal to a upon x plus a and reciprocal of this we get x upon y is equal to x plus a upon a.
आप देख सकते हैं जो गिवन कर्व है इससे y अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन a प्लस x होगी, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो x अपॉन y इक्वल टू x प्लस a अपॉन a होगी। Now we put here in the right hand side we can see here x plus a whole square upon a square can be written as x plus a upon a whole square. So in place of x plus a upon a we can write x upon y. So here this is x upon y whole square. And in the second term a square upon x plus a whole square can be written as a upon x plus a whole square, and in place of a upon x plus a whole square we can write here y upon x. So this is y upon x whole square, and here 2 rho upon a whole power 3/2. सो आप देख सकते हैं जो गिवन कर्व है इससे y अपॉन x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a अपॉन a x प्लस a होगा, इसका रेसिप्रोकल करके x अपॉन y इक्वल टू x प्लस a अपॉन a लिख सकते हैं। और जो ये इक्वेशन है इसमें x प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, इसको x प्लस a अपॉन a का होल स्क्वायर लिखेंगे और x प्लस a अपॉन a की रेस पे x अपॉन y लिखेंगे तो x अपॉन y का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से a स्क्वायर अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर है तो इसको a अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर लिखेंगे और a अपॉन x प्लस a की प्लेस पे y अपॉन x लिखेंगे तो y अपॉन x का होल स्क्वायर है। So this is the proving. Thank you.